कल फिगर नहीं आ रहे थे, आज आ रहे। ओके, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने 9th क्लास का मोनिरा प्रोटिस्टा, मतलब 5 वी आर स्टडीइंग yesterday organisms maintaining the monera, protista, fungi, plantia, animalia. ये 5 groups are classifications. First is monera. We have studied yesterday. Yesterday we are not having pictures of bacteria, cytobacteria, cyanobacteria, like that. Blue and green algae, mycoplasma, like that. Last one is the mycoplasma. Then second one is protista. Protista algae, like that. Yesterday we have not getting the figures. Today we have get the figure. Algae. These are all figures in by photo click by microscope. Diatoms, protozoa, fungi. मैं कल बताया था ना आपको, मशरूम्स टाइप के होते हैं ना फंगाइस, ईस्ट, अग्रिकस, लीचेस, लाइचिन्स. लाइचिन्स मतलब दिस इज a lichens. These are a indicator of air pollution. Aspergillium, Penillium. Then this next planet. Plants, they are multicellular eukaryote, having a cell walls, use chlorophyll and photosynthesis. All plants are included in these groups. They are divided into 5 main groups. Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms, and Angiosperms. Okay, we are studying yesterday. Animalia, animals. They are including organisms which are multicellular eukaryote with chlorophyll and cell wall. They are heterotrophs. They are divided into a same totally 9 characteristics, 9 groups. Sorry, 10 groups. Porifera, Salentrata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinoderma, Protocardata, and Vertebratas. Protocardata means non-vertebratas, also telling them. Classification of plants. Plants are divided into 5 main groups. Okay, first is Thallophyta, means इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भाई मशरूम्स के टाइप में होते हैं ये भी. In this group,
the plants do not have well differentiations body parts. इसमें कोई स्पेशल पार्ट्स नहीं होते, जैसा कि स्टेम नहीं होता, रूट्स नहीं होते, एंड लीव्स नहीं होते, और फ्लावर्स नहीं, सीड्स नहीं, कुछ नहीं होता इसमें. फिर भी इसको क्या कहते हैं? प्लांट्स. In this group, the plants do not have well differentiated body parts. The plants are called algae. They are mostly aquatic. Aquatic means पानी में रहने वाले. Spirogyra, Ulothrix, Cladophora, Chara, etc. These are figures of Thelophyta, flat body में रहते हैं. The next, Bryophyta. Bryophyta also aquatic plants, मतलब ये भी पानी में रहते हैं. In this group, the plant's body differentiated into a stem and leaf like structure, but they are no specialized. मतलब जैसा प्लांट्स में जो स्पेशलाइज्ड क्लासिफिकेशन तो उतना स्पेशलाइज नहीं रहता है, फिर भी एक तरह से लीफ एंड रूट्स के तरह दिखते हैं. स्ट्रक्चर, दे आर नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर द कंडक्टिंग ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अदर. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड द amphibians. Amphibians मीन्स ये पानी में भी रहते हैं, पानी के ऊपर भी रहते हैं, मतलब amphibians of the plant kingdom. Moss, Rischia, this is a plant. Marchantia, moss, these are all plants, but just half a portion of the plants are in water and half portion of in air. So they are called a amphibia plants, also called the amphibiotic plants. The next, Pteridophyta, not Pteridophyta, Pteridophyta. In this group, the plant's body differentiated into roots, stem and leaves. यहाँ से थोड़ा डेवलप हो गया. फर्स्ट जो प्लांट्स था, ओनली द प्लांट्स आर देयर बट नॉट differentiations are different parts of the body. Second one is just root and leaves. Third one is roots, stem and leaves. Ferns, इसको ferns को walking ferns भी कहते हैं. जैसे ही अपना लीव्स जमीन पे लगता है, वहां से और प्लांट्स चालू हो जाता है. दिस इज आल्सो कॉल्ड ए वॉकिंग फर्न्स. Marsilia, differentiated roots, stem and leaves, and has vascular tissues for the conducting of water and other substance from the one part of the plant body to another plant. मतलब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो, इससे पहले के जो भी प्लांट्स है ना, उसमें क्या होता है, सिर्फ अपना अपना मल्टी सेल्यूलर सेल है ना, हर एक सेल अपना अपना न्यूट्रिशंस पे लेना है, डाइजेस्ट करना है, एग्जॉस्ट करना है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब थोड़ा बहुत एक पार्ट से अनदर पार्ट प्लांट के बॉडी में ट्रांसफर होता है. जैसे कि दीज आर फॉल्स, आप लोग देखे होंगे जहां पर भी मॉइस्चर ज्यादा रहता है, ज्यादा जहां पर पानी गिरते हुए रहता है, वहां पर इस टाइप के प्लांट्स उगते हैं. नेक्स्ट थोड़ा डेवलप हो गया, जिम्नास्पर्म. द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर द नेकेड सीड्स. नेकेड सीड्स मींस इसके सीड्स पे कोई फ्रूट्स नहीं होता है. सो द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर नेकेड सीड्स. जिम्ना मींस नेकेड, स्पर्मा मींस सीड्स. सीड्स पे जो भी फ्रूट्स का कवर नहीं होता ना, उसको जिम्नास्पर्मा ऐसा कहते हैं. दे आर यूजुअली पेरिनल, एवरग्रीन एंड वुडी.
एक पेरिनियल मतलब पेरिनियल, कहीं भी उग सकता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी होता है, ऑलवेज ग्रीन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बीदर में भी देख सकते हैं, जैसा कि वो सिंधी का झाड़ कहते हैं और कोकोनट का झाड़ कहते हैं। हाँ, ये सभी के पाइन्स एंड साइकास, these plants are like that. This is first one is pines, second one is cycas. ये शो प्लांट्स में भी उगाते हैं, जैसा कि अपना खजूर का झाड़ होता है ना, उस टाइप के होते हैं, दैट इज साइकास प्लांट्स। देन लास्ट हाईली डेवलप्ड इन प्लांट एंजियोस्पर्मा planaria organisms. These plants of this group bears covered seeds. Angio means covered, sperma means seeds. Angiosperma means जिस सीड्स को फ्रूट्स का कवर होता है, यानी कि कोई कवर होता है। एंजियोस्पर्मा फॉर एग्जांपल मैंगो होता है, बेर होता है, ओके, एवरीथिंग इज देयर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें फ्लावर्स होते हैं। द प्लांट्स एम्ब्रॉय इन द सीड्स हैव साइट कोटिलेडॉन्स, मतलब इसके कोटेड होता है सीड्स के ऊपर। एंजियोस्पर्मास आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइटोलिडॉन्स। कोटिलेडॉन्स मतलब उसके जो कोटेड होता है ना, उसमें दो टाइप्स के होते हैं। प्लांट्स विद सीड्स हैविंग ए सिंगल कोटिलेडॉन आर कॉल्ड मोनोकॉट्स। फॉर एग्जांपल राइस, wheat, maize, jowar, they are also only one cotyledon. Cotyledon means जैसे कि एक हिस्सा होता है, उसमें दो पार्ट्स इक्वल नहीं कर सकते। जैसे कि ग्राउंड नट में होता है, दो पार्ट्स हो जाते हैं ना, चना में दो पार्ट्स होते हैं, इसमें नहीं होता है, राइस में नहीं होता है, व्हीट में नहीं होता है, माइज में नहीं होता है, एक्सेट्रा। द ग्रीन ग्राम्स, पीस, tamarind, etc. Plants with seeds having two cotyledons, the दो कोटेड होते हैं उसमें, are called a dicots, monocot and dicot. So how to differentiate? उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? उसको हम लीफ से पहचान सकते हैं, सीड से पहचान सकते हैं, रूट से पहचान सकते हैं। हाँ, वी आर आइडेंटिफाइड by dicot or monocot. Monocot and dicot को how to identify the dicot and monocot? By the help of their seeds, their leaves, their roots, and their flowers, and their germinations. There are 5 types of identifications, monocot and dicot. Dicot and monocot को 5 types में identify कर सकते हैं. Which is the dicot, which is the monocot? यहां पर एक सिंपल एग्जांपल दिया है, डाइकॉट। फर्स्ट फिगर इज डाइकॉट। डाइकॉट में क्या होता है, सीड को हम जमीन में डालने के बाद, जर्मिनेशन के लिए जमीन में डालने के बाद उसका रूट अंदर ही रहता है, सीड्स भी अंदर रहता है, उसका ग्रोथिंग प्लांट ऊपर आ जाता है। डाइकॉट में क्या होता है, रूट अंदर रहता है लेकिन सीड बाहर आ जाता है, सीड के साथ प्लांटेशन बाहर आता है, दैट इज अ डाइकॉट। Then classification of plants, इतने टाइप के, do not have differentiate body parts। कौन से इसमें, फर्स्ट इसमें प्लांट्स के थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में थैलस भी कहते हैं इसको, थैलोफाइटा में do not have differentiate by the body parts, उसके बॉडी पार्ट से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। Then second, have the differentiations body parts, yes। Bryophyta without vascular tissues, इसमें vascular tissues नहीं रहते, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Then with vascular tissues are there pteridophyta, do not have produce the seeds, यहाँ पर seeds produce नहीं कर सकते। The next produce the seeds, phenograms, उसमें दो टाइप्स होते हैं, जिम्नोस्पर्मा, एंजियोस्पर्मा। जिम्नोस्पर्मा में बियर नेकेड सीड्स, सीड्स के ऊपर कोई फ्रूट्स कवर नहीं रहता है, इसको जिम्नोस्पर्मा, जिम्ना मींस नेकेड, स्पर्मा मींस सीड्स। बियर कवर्ड सीड्स,
एंजियोस्पर्मा, एंजियो मीन्स वन कोट, उसके ऊपर कोटेड रहता है, स्पर्मा मीन्स सीड्स, सीड्स पे फ्रूट्स कवर, मतलब एक कवर्ड होता है विथ हैविंग ए कवर्ड एंजियोस्पर्मा. सो एंजियोस्पर्मा में टू टाइप्स होते हैं. वन इज वन कोटिलिडॉन मीन्स मोनोकॉट, two cotyledons dicot. Okay, these are the classification of plants. इसको आप इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. प्लांट्स do not have differentiate the body part. This is called a thallophyta. Thallophyta have differentiated by parts. There are two, with vascular tissues, without vascular tissues. Without vascular tissues, bryophyta. With vascular tissues, there are two types. One is peridophyta, another is means do not have produce the seeds. Okay, this is peridophyta, and produce the seeds means there are two types. Gymnosperma and angiosperma. Gymnosperma means bear naked seeds, मतलब सीड्स पे कोई कवर नहीं होता है. एंजियोस्पर्मा मीन्स बियर कवर्ड सीड्स. एंजियोस्पर्मा, एंजियोस्पर्मा में और दो टाइप होते हैं. वन इज मोनोकॉट, अनदर इज डाइकॉट. इसको इस तरह से क्लासिफिकेशन करके हम उसका नोट्स बना सकते हैं. द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. Animalia. Animals are divided into a 10 group. They are Porifera, Coelenterata, Plantae, Helminthes, Nematode, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, प्रोटोकॉर्डेटा. प्रोटोकॉर्डेटा और नॉन वर्टिब्रेटा भी कहते हैं इसको. प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. फर्स्ट इज पोरीफेरा, स्पॉन्जेस. इसको हम पोरीफेरा भी कहते हैं. दे आर, हम कल यहां तक आए थे लेसन. दे आर, मैं थोड़ा रिवाइज क्यों किया, वी आर नॉट हैविंग यस्टरडे द फिगर्स ऑफ द एग्जांपल्स. So porifera, sponges, इसको sponges भी कहते हैं because their body shape is like a sponge. So we call the sponges. They are aquatic, non-motile animals. Aquatic मतलब ये पानी में रहने वाले. Attached to some solid supports. कोई solid support को attach होके वो develop होते हैं. They have spores all over the body, forming a canal system which helps to circulate the water, bring food and oxygen. उसके थ्रू वाटर, इतना प्रेशर में वाटर फ्लो होता है, उसमें वाटर जब भी उसके बॉडी से फ्लो होता है तो वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशंस एंड ऑक्सीजन सकिंग करते हैं, बाकी के पानी को बाहर छोड़ देते हैं. ओके, सो हेल्प टू सर्कुलेट द वाटर, ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन. दे हैव ए हार्ड आउटर स्केलेटन. उसके बॉडी के आउटर लेयर में थोड़ा हार्ड स्केलेटन ये होता है, अंदर वो एक स्पंज टाइप रहते हैं. एंड डू नॉट हैव एनी टिश्यूज. इसमें कोई टिश्यूज नहीं रहते. स्पॉन्गिला, साइकॉन, Eupletelia. These are the figures. The next, second one is some developed in the animals. Coelenterata. They are aquatic. They are all non-vertebrates, means boneless. इसमें कोई bone नहीं होता है. Non-vertebrates. They are aquatic animals. मतलब ये पानी में रहने वाले. There is a cavity into the body. Cavities. इसके अंदर कैविटी बॉडी रहते हैं. कोइलोन, उसको कोइलोन भी कहते हैं. Their body has two layers of cells, and outer layer and inner layer. दो layers होते हैं, जैसे कि outer layer, inner layer. Some live in
कॉलोनीज, मतलब ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनीज में ग्रुप में रहते हैं, एंड अदर्स आर सिंगल, चंद सिंगल भी रहते हैं, मैक्सिमम एक कॉलोनीज मतलब ग्रुप में रहते हैं। करोल्स, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोरल्स, जेलीफिश, सी एनिमोन्स, दिख रहे हैं ना ये सब फिगर्स, दे आर सेलेंट्रेटा। देन थर्ड वन इज फ्लैट वॉर्म्स, मतलब फ्लैट जो बॉडी रहता है ना उनका, फ्लैटी हेलमिनेथस, मतलब फ्लैट वॉर्म्स, फ्लैट बॉडी का, they are having flat body which a bilaterally symmetrically both right and left half of the body is similar. They have three layers of cells and are called tri- triploblastic. They do not have true body, मतलब एक प्रॉपर बॉडी का शेप कोई नहीं होता. दे मे फ्री लिविंग इन पैरासिटिक प्लानिटेरिया, फ्री लिविंग्स, लीवर, फल्क, टैपवॉर्म, इस टाइप के होते हैं. दे आर ऑल फ्लैट बॉडी. इसके सभी के बॉडी एक तरह से फ्लैट होते हैं, राउंड शेप में नहीं होता, फ्लैट शेप में रहते हैं, इसलिए उसको फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं. नेमटोडा, दे आर सिलेंड्रिकली बॉडी, सिलेंड्रिकल मीन्स राउंड शेप में होते हैं. दे बॉडी इज bilaterally, symmetrically and triploblastic. They do not have two body cavities. They have tissues but no real organs. Tissues रहते हैं लेकिन उसमें कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं रहते हैं. They are parasitic. For example, roundworms जो पेट में रहते हैं, पिनवर्म बहुत स्मॉल साइज में रहते हैं, राउंड शेप में रहते हैं, लॉन्गिट्यूड. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज एनिलिडा. देयर बॉडी इज बायलैटरली, सिमेट्रिकली एंड ट्राइक्लोब्लास्टिक. दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी. इसके अंदर एक बॉडी शेप रहते हैं, अपना बॉडी इंडिपेंडेंट रहता है. देयर बॉडी इज सेगमेंटेड. देयर इज ए डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स. उसके अलग अलग से ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे अलग अलग ऑर्गन्स है, हाथ है, पैर है, नाक है, कान, अलग अलग ऑर्गन्स है. इसके पास भी ऐसे डिफरेंस ऑर्गन्स रहते हैं. दे आर फाउंड इन वाटर एंड ऑल्सो लैंड. ये पानी में भी मिलते हैं और लैंड पे भी रहते हैं. अर्थवॉर्म, आप सब लोग देखेंगे अर्थवॉर्म. नेरिस, लीच, लाइक दैट. लीच ये जो जहां पर भी चिपकता है ना, वहां से खून सक करता है वो. नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा, जॉइंट लेग्ड, मतलब इसमें थोड़ा बॉडी का शेप होता है, जैसे कि प्राउन होता है, क्रैब होता है, कॉकरोच होता है, स्पाइडर्स होता है, ये सभी. बट दे आर ऑल्सो बोनलेस, मीन्स नॉन वर्टिब्रेटा. बोनलेस मीन्स नॉन वर्टिब्रेटा. They have bilaterally, symmetrically body, bilaterally specially body रहता है. The body is segmented, proper shape बनता है. They have a open circulatory system. उसके पास एक open circulatory system, blood circulation system रहता है. The body cavity is filled with blood. मतलब blood में से एकदम रेड ही नहीं होता है. नॉन वर्टिब्रेटा में ऑलवेज अदर देन रेड कलर, कौन सा भी ब्लड होता है लेकिन रेड नहीं होता है. बट दे बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ अ ब्लड बट नॉट रेड कलर इन अदर या सम अदर कलर. दे हैव जॉइंटेड लेग्स. एक जॉइंटेड लेग्स भी रहते हैं उसमें. फॉर एग्जांपल प्राउन, क्रैब, कॉकरोच, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, centipede, peda. They are all also a example of arthropoda. These are all arthropoda. The next, seventh one is mollusca.
They have bilaterally, symmetrically. They they coelomic cavities is reduced. इसमें reduce मतलब कम होता है. There is a little segmentations. They have open circulatory system and kidney-like organs for extractions. मतलब waste materials को बाहर डालने के लिए इनके पास एक extractions organs हो जाता है, रहता है. बाकी के पास नहीं रहता है. They have a feat of moving around. उसके सराउंडिंग में फिरते. Snails, mussels, cytons, octopus, like that. Snails first is snail, phyla, mussels, inu, cyton, octopus. They are all having a large of small to large size of body, but they don't have the any bones and they don't have any red blood. Other blood is there, but there is no red color. Spinny neck skinned. Spinny skin means जो क्या बोलते हैं हम रफ जो स्किन रहता है स्पिनी स्किन. Echinodermata, they are spinning skinned organisms. They are free living marine animals. They are preploblastic and have coelomic cavities. They have water-filled tube feet which help in movements. Movements के लिए वो उसका बॉडी को movements कर लेता है, वाटर फिल कर लेता है. दे हैव हार्ड स्केलेटन. उसके ऊपर जो हार्ड स्केलेटन होता है, फॉर एग्जांपल स्टारफिश होने दो, सी ऑर्चिस होने दो, फाइबर स्टार्स, like that examples. They are all echinodermata. The next ninth one is protocardata. We are studying up to ninth. They are non-vertebrates. Means इसके बॉडी में कोई बोन्स नहीं रहते हैं. यहाँ तक जो भी नाइन्थ तक जो भी पढ़े ना, दे आर ऑल इन नॉन वर्टिब्रेटास बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी बोन्स and not having red color blood. They are having blood in any color but not red. They have bilaterally, symmetrically and are triploblastic. मतलब 3 layers होता है. They have coelomic cavities. They have a notocard which is long rod-like structure along its back to which muscles are attached and help in movements. यहाँ से प्रोटोकार्डेटास में क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्या हो जाता है, बोन्स स्ट्रक्चर्स होते हैं. अभी ये दे आर इन बिटवीन कार्डेटा एंड नॉन कार्डेटा के बीच में रहने वाले प्रोटोकार्डेटा. प्रोटोकार्डेटा मीन्स नॉन कार्डेटा 8 क्लासिफिकेशंस होते हैं एंड कार्डेटा एक ग्रुप है. कार्डेटा एंड नॉन कार्डेटा के बीच में जो रहता है ना, दैट इज प्रोटोकार्डेटा. इन बिटवीन द कार्डेटा एंड नॉन कार्डेटा, दैट इज कॉल्ड ए प्रोटोकार्डेटा. एग्जांपल बेलेनो ग्लासेस, हर्डमेनिया, Amphioxus. They are three types of protocardata. They are not non-vertebrates and 100% vertebrates. The last one, there is vertebrata. Vertebrata means जिस एनिमल के बॉडी में बैकबोन होता है, इसको vertebrates. They have vertebral column and internal skeleton. इसके skeleton होता है ना, उसको जिस बॉडी में skeleton होता है, that is called a vertebrata. They have bilaterally, symmetrically and are triploblastic. They have
Coelomic cavities. The body differs into tissues, organs. Their body consists of four regions: heart, head, neck, tongue, and tail. तो वर्टिब्रेटस के अंदर एक स्पेशली क्या होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. सर पैर, सर पैर, हाथ पैर, बॉडी बोलते हैं ना, बैकबोन, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. दे आर हैविंग टू पेयर्स ऑफ फाइन और लिम्स. दो दो पैर के, पैर पे हो सकते हैं, लिम्स मतलब आर्म्स पे हो सकते हैं. देयर रेस्पिरेशन इज aquatic forms is by gills and land forms respirations by lungs. जो पानी में रहते हैं वो गिल से अपना रेस्पिरेशंस करते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, वो अपने लंग से रेस्पिरेशंस करते हैं. दे आर सेक्सेस आर सेपरेट. दो सेक्स में रहते हैं, मेल एंड फीमेल. Vertebrates are grouped into 5 classifications are Pisces, amphibians, reptilia, eaves, and mammalia. Okay. The first one is species. Pisces means fishes. आपको फिश के बारे में मालूम है? मछली जल की रानी होती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाए तो डर जाएगी, बाहर निकाले तो मर जाए. मतलब 100% is living in water. They are fishes living in water. Their skin is covered with a scales. Scales मतलब एक टिकली के जैसा रहता है ना, and plates. They respire using gills. सांस के लिए वो gills यूज करते हैं. They have streamlined body. Streamlined body मतलब एक शेप, एक शिप शेप में बॉडी रहता है. And finish with help them to move in water. वो सामने जैसे कि शिप होता है ना, शिप का सामने का शेप कैसा होता है, एक एरो के हेड कैसा होता है ना, उस टाइप का रहता है. Streamlined body and fish which helps to them to move in water. They are cold blood animals. Cold blood animals means which animals the body temperature changed in atmospheric temperature. Atmospheric का टेम्परेचर जैसा लो होता है, अपना बॉडी टेम्परेचर भी लो कर लेते हैं. तो दैट इज कॉल्ड ए कोल्ड ब्लड एनिमल. एंड देयर हार्ट हैज ओनली 2 चेंबर्स. स्पीसीज का हार्ट 2 चेंबर में होता है. एंड दे ले एग्स, ये मतलब अंडे देते हैं, फ्रॉम विच द यंग वंस hatch out. Some fishes have skeleton made a cartilage like shark, ray fish, etc. And some have skeleton made a bone and cartilage like tuna, ruha, etc. Electric ray fish, stinging fish, ruha, tuna, shark, like that. These are the species. Fishes means fishes. इसको और एक बार बताऊं, उसका स्पेशली एक 4 पॉइंट लिखना है. स्पीसीज का इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या क्या होता है? दे आर लिविंग इन वाटर, दे हैव कवर्ड स्किन, हाँ, their respiration is using by gills, the body is streamlined, and they are cold blood animals. The heart is having 2 chambers. These are the special. They have laying the eggs. ओवीपैरस, एग्स जो देता है ना उसको ओवीपैरस कहते हैं. जो डायरेक्ट मतलब अपने एक शेप का जो रिप्रोडक्शन करता है उसको ओवीपैरस, वाइवीपैरस कहते हैं. जो लेग ले करते मतलब जो अंडे देते हैं उसको ओवीपैरस, जो बच्चा देता है उसको वाइवीपैरस. ओके, द इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन सेकंड वन इज amphibians. Amphibians means
living in water and land. They are found in land and water. They do not have scale but have mucus glands. Special on their skin. उसके स्किन पे इसके बॉडी पे कभी भी कच्चा रहता है. They are cold blood animals. They are also cold blood animals. And their heart is 3 chambers. फिशेस में कितने चेंबर्स थे? 2 चेंबर्स. इसमें हार्ट के 3 चेंबर्स होते हैं. The respiration is through gills or lungs, and they also laying eggs in a water. इसका स्पेशलाइजेशन क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज दे आर फाउंड इन लैंड एंड वाटर. दे डू नॉट हैव स्केल बट हैव सम mucus glands on their skin. Special glands इसके स्किन पे होते हैं. They are cold blood animals. The heart is 3 chambers. Respirations through gills or lungs. They lay eggs because they are all oviparous. Oviparous. O means oviparous. For example, frogs. Amphibians के लिए example, frogs, toads, salamanders, etc. This is frog, this is toad, this is salamander. The next, reptiles. They have scales and breathe through lungs. ये लंग्स से ही ब्रीथिंग करते हैं. They have special body scales. They are cold blood animals. ये भी अपना बॉडी का टेम्परेचर एट द एनवायरमेंट के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड ए कोल्ड ब्लड एनिमल्स. मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चेंबर्स हार्ट. इसमें भी हर एक को हार्ट में 3 चेंबर्स होता है. एम्फीबियस में भी 3 चेंबर्स होते हैं, इसमें भी 3 चेंबर्स होते हैं. फिशेस में हार्ट के 2 चेंबर्स होते हैं. बट क्रोकोडाइल्स हैविंग 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट. यही एक है, इसमें क्रोकोडाइल का एक ही हार्ट है. क्रोकोडाइल रैपिटल्स में क्रोकोडाइल एक ही है जिसके हार्ट के चेंबर्स 4 होते हैं. बाकी सभी रैपिटल्स के हार्ट के चेंबर्स 3 होते हैं. दे ले एग्स. दे आल्सो ओविपैरस, मतलब ये अंडे देते हैं. विथ ए हार्ड कवरिंग. इसका फर्स्ट जो फिशेस का एग्स होते हैं बहुत जली बॉल्स के तरह होते हैं. एम्फीबियस के भी एग्स जेली के तरह होते हैं. बट रेप्टिलिया के जो एग्स होते हैं इसका हार्ड कवरिंग रहता है. मतलब जैसे कि मुर्गी का अंडा रहता है ना, उससे थोड़ा पतला वाला हार्ड कवर, उतना मतलब मजबूत नहीं होता है. एग्जाम्पल, स्नेक्स, टॉर्टाइल्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा. दे आर ऑल रैपिटल्स. हम कछुए को क्या कहते हैं? एम्फीबियस. जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं. बट दे नॉट लिविंग इन वाटर. द लिविंग इन लैंड ओनली. But they go to the in water for their food purpose. They go to the water, but not living in water. Lizard, flying lizard, crocodiles, they are also all are a reptilia or reptiles. Then eaves. Eaves means birds. They are warm blood animals. First one fishes क्या था? Cold blood animals. Amphibians also cold blood animal. Reptile also cold blood animals. जैसे अपना एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है तो आप बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन कर लेते हैं. जैसा एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा होता है अपना बॉडी टेम्परेचर भी ज्यादा है. मतलब वेरिएशन कर सकते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर और चेंजेस just with the atmosphere. But eels and mammals are not changes in blood temperature. They are always fixed the temperature in blood. So they are called warm blood animals. They have 4 chambers of heart. First one is fishes में 2 chambers थे, amphibians में 3 chambers थे, reptiles में भी 3 chambers थे, except crocodile का heart chambers 4 है. Then ईव्स में हार्ट के चेंबर्स 4 होते हैं. दे ब्रीथ थ्रू लंग्स. ये इनका ब्रीथिंग लंग्स के थ्रू होते हैं. ओनली
फिशेस में गिल्स के थ्रू होता है, एम्फीबियस में गिल्स एंड स्किन एंड लंग्स, दो तीन टाइप के होते हैं। रेप्टिल्स में ओनली लंग्स थ्रो ब्रीथिंग होता है। यहां पर भी एप्स में भी breathing through lungs. They have an outer covering of feathers. इनका स्किन पे फेदर्स मतलब पंख बोलते हैं ना, वो फेदर से इनका बॉडी कवर होता है। बिकॉज दे आर ए वार्म ब्लड एनिमल। वार्म ब्लड एनिमल में इनका बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। उसको सर्दी से बचने के लिए उसको खुदा ने दिया हुआ ड्रेस है, जैसे दैट इज ए फेदर्स। देयर आर 2-4 limbs. There are 2-4 limbs, मतलब सामने के दो हाथ होते हैं, and modified into a wings, उसको modified कर लिया wings में। and for flying they have eggs, ये भी eggs देते हैं, मतलब they are also oviparous। oviparous में जो अंडे देता है उसको oviparous कहते हैं। crow, sparrow, pigeons, duck, stork, ostrich, ये सभी है ना। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच उड़ता नहीं लेकिन दौड़ता है। ऑस्ट्रिच इज नॉट फ्लाइंग बट दे हैव ए विंग्स। 4 limbs आर कन्वर्टेड इनटू विंग्स। विंग्स में कन्वर्ट हो गए। एंड बैक लिम्स क्या है? ड्यू टू देयर लिविंग कंडीशंस, जो जहां जहां रहते हैं वो अपने हिसाब से अपने पाँव को चेंजेस कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो, उसके पैर बहुत छोटे होते हैं बिकॉज दे आर नॉट हैविंग मच वर्क ऑफ लोअर लिप्स, उसके बहुत कम यूज होता है पैर, इसलिए वो पैर छोटे होते हैं। बट ऑस्ट्रिच, इसके पैर सबसे बड़े होते हैं बिकॉज दे मैक्सिमम यूज ऑफ लेग्स, सो दे स्ट्रॉन्ग। उसका विंग्स बहुत छोटे होते हैं बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग द upper limbs, 4 limbs. Okay, the next, mammalia, mammals. They are warm blood animals. मतलब हम भी इसमें ही आते हैं। ह्यूमन बीइंग, बैट, व्हील, टाइगर, लायन, डॉग, रैट, कैट तक जो भी होते हैं, जिस बॉडी पे, जिसके बॉडी स्किन पे हेयर्स होते हैं, और सभी मैमल्स होते हैं। जिसके बॉडी पर हेयर्स नहीं होते, दैट इज नॉट मैमल्स। और एक मैमल्स को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक तो बॉडी स्किन पे क्या होना चाहिए? हेयर्स होना चाहिए, वन। एंड सेकेंड वन इज कान के जो ये बोलते हैं ना डिस्क, ईयर डिस्क, जिस एनिमल्स को ईयर डिस्क सेपरेट रहते हैं, दे आर ऑल मैमल्स, मतलब ये बच्चे देने वाले एनिमल्स है। दे आर ऑल वार्म ब्लड एनिमल्स। दे हैव 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट में, मतलब जो भी मैमल्स है उसके हार्ट में 4 चेंबर्स। दे हैव मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स मीन्स मतलब फॉर प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑफ मिल्क टू न्यूरिश देयर यंग वंस, मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए मैमल्स होते हैं। ममरिया ग्लैंड्स, ममरिया ग्लैंड्स मीन्स बच्चों को, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ना जो भी एनिमल्स, उसको क्या बोलते हैं? मैमल्स अथवा मैमलिया। The skin have hairs and sweating glands, मतलब पसीना आने के ग्लैंड्स रहते हैं। Most of them give birth to their young ones, इसको बच्चे देते हैं। Some of them lay eggs like platypus and echidna। दो ही मैमल्स है जो अंडे देते हैं, that is platypus and echidna। And other than platypus and echidna, all mammals are birth their young ones, मतलब अपने बच्चों को जन्म देते हैं। For example, cat, first figure is platypus and second is, उसके नीचे जो भी है ना वो echidna। Then cat, first one is platypus, second one is लेफ्ट टू राइट मैं जो बोल रहा हूं, प्लाटीपस, कैट, बैट, ह्यूमन, उसके बाद एकिडना, डॉग एंड लॉयन। इसमें जितने भी है ना, ये प्लाटीपस, एकिडना, ये दो को छोड़ के बाकी सब बच्चों को
मतलब young one is birth, but they are two, platypus and echidna are laying eggs only. Hmm? And seventh, nomenclatures, especially all living organisms have been given a scientific name which can be used to identify them anywhere in the world. This system of scientific naming organisms is called binomial nomi, binomial मतलब ये बायोलॉजिकल नेम्स रहते हैं हम ऊपर से जो पढ़ते हैं ना nomenclature. The binomial nomenclature consists of two parts. The first part is name of the genus and second part is the name of species. Genus and species. This system, scientific naming or nomenclature we use today was introduced by Carlos Linnaeus. Example, the scientific name of human being is Homo sapien. Homo is the name of genus and species. Sapien is the name of species. Homo sapien. हम इंसान को एक सेपरेट सा नाम दिया हुआ है. ह्यूमन बीइंग बोलते हैं ना, होमो सेपियंस उसका साइंटिफिक नेम है. ओके, आई थिंक today's is my class over and the chapter is biodiversity of living organisms. इसको आप लोग नोट्स बनाइए. नोट्स बनाकर अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो you are successfully in this chapter. I think maybe कुछ अगर मिस्टेक्स भी अगर हो गए तो उसको करेक्शंस कर लेना. ये पूरा क्लास रिकॉर्ड होता है. आप जब भी ओपन करके इस लेसन को पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट नोट्स इसमें से आप लिख के क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उसका आंसर भी कर सकते हैं. बाद में हम जब भी टेस्ट का पेपर देंगे तो आपको हेल्प होगा हाउ टू द राइट द आंसर. यहाँ पर टोटली 32 पेजेस में हमने कंप्लीट कर दिया लेसन को विथ डायग्राम्स. बट बुक में इसका नियर अबाउट एक 35 पेजेस का है. तो एक एक पेजेस को हम क्या करते हैं बहुत शॉर्ट करके इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसमें उसको इंपॉर्टेंट नोट बना के उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर एक ऑर्गेनिजम्स का एक स्पेशल नोट है. जितने भी पॉइंट्स है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. जैसे फॉर एग्जांपल मैमिलिया में हम पॉइंट्स बनाए कैसे. दे आर वार्म ब्लड एनिमल्स, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, दे हैव 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, दे हैव mammary gland for production of milk to nourish their young ones. मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्पेशल ग्लैंड्स बनाए. थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, द स्किन हैव hair and sweating glands. A fifth point. Then sixth point is most of them given the birth to their young ones. Sixth point. Seventh point, some of them lay eggs. Example, platypus and echidna. बाकी के mammals के लिए examples cat, rat, dog, lion, tiger, something is there. Okay, इसको इस टाइप के हम पॉइंट्स बना के लिखिए. आपको बहुत इजी हो जाएगा. जैसे कि ईव्स है, इसका भी पॉइंट्स अलग अलग से बनाए. एक एक पॉइंट्स का एक एक फुल स्टॉप दिया गया है, उसको एक पॉइंट्स बना के उसका एग्जाम्पल लिखो. आपको क्लियर कट मिल जाएगा. बिकॉज द चैप्टर वाज हेल्प्स टू इन योर PUC सेकेंड ईयर. आपको ये जो भी बायोलॉजी केमिस्ट्री जो भी इस 9th में पढ़ते हैं वो आपको PUC सेकेंड ईयर साइंस में अगेन रिपीट द सेम. इसको थोड़ा एक्स्ट्रा डेवलप किया है, इसको थोड़ा ऐड करके उसको और ज्यादा नॉलेज के लिए इसको बढ़ा दिया गया. बट अप टू द 9th दिस इज एनफ टू योर प्रिपेयरिंग योर नोट्स. आपका नोट्स बनाने के लिए दिस नोट्स इज एनफ. ओके, आपका जो भी क्वेश्चंस, जो भी पॉइंट्स आपको जो भी देना है आप क्या कर सकते हैं
चैटिंग करके मैसेज भी कर सकते हैं, एंड आप कोई क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, बिकॉज वी आर टुमारो वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम क्वेश्चंस। मैं लाइव में आता हूँ, आप जो भी माइक ऑन करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अदर देन नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक फिजिक्स और केमिस्ट्री लेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से केमिस्ट्री लेंगे, कल का चैप्टर होगा केमिस्ट्री। और कुछ आपको डाउटफुल क्वेश्चंस है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं। ओके, देन आप कुछ भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस हिसाब से, जैसे हमने पॉइंट्स बताए, उस हिसाब से आपको नोट्स बनाना है। परसों एक कमेंट था कि भाई सर, डोंट टेल द इंग्लिश टू इंग्लिश, प्लीज टेल इन सम हिंदी आल्सो, मीन्स हिंदी में उर्दू में बताइए। मुझे उर्दू उतना परफेक्ट नहीं आता, फिर भी मैं हिंदी में बताने की कोशिश किया हूँ। ओके, देन आपको कोई डाउट है तो बता लेना है। ओके, हैव ए नाइस डे, मेंटेन योर हेल्थ एंड आपके हेल्थ को अच्छा मेंटेन कर लो, और जब भी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, मेंटेन योर हेल्थ एंड केयर अबाउट योर सेल्फ एंड सराउंडिंग योर सेल्फ, एंड विश ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।